Now, like we had several movements in our college as well. We pitched in different startup competitions and had several recognitions. And at the same time, we were able to crack many competitions, and we were called upon for many called by many startup incubator, as well as like all the things that I got in my life is due to the step that I took to do a startup rather than focusing on a normal job. Now, this is all that I can say ki why to do a startup. First of all, it elevates your life as a human. Who am I speaking, Satya? No. So the first of all, it elevates your life as a human. कि you start thinking big, and you start thinking कि आप जो कर रहे हो उसका कुछ मतलब है इस वर्ल्ड में, and you are there to serve people as well rather than just having a salary and having a normal life. So, having said that, I will bring on ki how to do a startup, and I will focus again on my learning that I got in my college startups. First of all, there is a quote from Sadhguru: "Life is not about certainty; it's about clarity." अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसका आउटकम मिलेगा या वो आउटकम आपको अच्छा ही मिलेगा। You should not do for that outcome. You should rather enjoy the process, and you should have the clarity कि आपको करना क्या है। So this is one of the greatest quote that I learned that I learned in my that I learned from Sadhguru as well. I got the realization in my journey as well. And coming along, the most important things to take care in your startup journey is of three W's. First is, if you got an idea, then figure out कि किसके लिए आप बना रहे हो, whom, for whom are you solving the problem, and then why do you care about solving the problem. Just for the case, in case of mine, the key wala problem was very close to me, because I have faced this problem in my college life, in my hostel life. Ki I used to misplace keys, I used to forget password as well. So I care to solve this problem. Then you have to figure out, okay, why do you care to solve this problem, and then what are you solving. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप सॉल्व क्या करना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बनाना कुछ चाहते हो और एट द एंड कुछ और बन जाता है। सो एवरी टाइम यू आर स्टक, जस्ट आस्क these three questions कि for whom, why and what. Then you will certainly get some clarity over what you want to do with your startup and how to do things. Then within this journey I had so many failures as well. The slide I show कि I had so many recognition achievements and all, but उसके कई multiples में तो मेरा rejections थे, कई multiples में मेरे failures थे. And from that I learned कि it is very common to have failures in a big journey or in a roller coaster ride. If you don't cherish the failures, you will never succeed. आपको कभी भी success नहीं मिलेगा. So just normalize rejection and failures is what I want to say. And अगर आप सोचते हो कि फेलियर हो गया तो क्या करोगे या नहीं कर पाओगे, तो अगर आप, दिस इज अ कोट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेब सीरीज दैट आई हैव सीन, कि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट नो कि आप कर भी पाओगे कि नहीं. So if you ever in doubt, just give it a shot and have a full throttle try, and then see कि आपको चीज़ मिलती है कि नहीं. Because entrepreneurship is not about achieving something or achieving any materialistic goal. It's all about the journey that you have. So just enjoy the journey. And within the go, as you as you build your startup, as you connect with different people, you meet with different kind of people like maybe your teammates, maybe your mentors. The reason of why I'm sitting here is also because I did the startup in my college life, so it builds so many relationships, so many connections, and being good with them always pays off. So yeah, so again, the leveraging on the point, key startup is all about the journey that you build, not about just a product, not about just achieving a profit. It's the journey that matters.
I guess after this slides as well and the presentation, some of you would have some clarity कि करना क्या है या कैसे करना है. But कई बार ऐसा भी होगा कि कई लोग होंगे कि किसी को डाउट रहेगा कि स्टार्टअप करना करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, कैसे करेंगे स्टार्टअप या नहीं करेंगे. So again, I just want to leave you with this quote, one of the movie कि अगर आप उस रास्ते को लोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा. तो इफ यू आर जस्ट स्टक इन द ट्रैफिक, देन यू विल नेवर नो कि आप आगे चल के वो यू विल बी रीचिंग द हाइट्स और नॉट. सो यू हैव टू टेक द रोड to find it out ki what is the ending, or if you are so do if you have doubts, that is okay. If you are insecure with your success rate, if you're insecure with your confidence, that is also okay. Just try building it out, try hustling it out, and with proper data management, with proper tools, and studying and researching it out, you have to take the road to find something great out of it. So this is all about the journey I had and the presentation. I'll just try to recommend some resources that you can build on, or that you can search on and can help you in a startup. So you can take a screenshot of this there to compete and agorize some of the competition website where you can find different competition, and maybe you can get a seed fund through them as well. And some books recommendation as well, Rework from Jason Fried or Hook from Neeraj. These are the some great books that will help you to gain some clarity over things, or over it all with life as well. So yeah, this is a good news. Ki those who have attended this session or the rest of the session will be getting a free resource curated by me, which would be beneficial in a startup journey as well. So that's all from my side. If you have any questions, you can let me know. Uh, Thank you, Akash ji. May I ask any question to? Uh, Thanks you, Mr. Akash. There's a great session. I was wondering if you can throw some light on the some of the startup related to metaverse and its future. Okay, okay. So sure. So in Metaverse, I was basically working in a startup called Meta Arrow. So they were building a startup for creators or artists. So जैसे normally अगर आप देखोगे parties होती हैं या 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 कोई shows होते हैं, तो कोई भी अगर आप कोई शो ले लो, इफ यू से कि सोनू निगम का कोई शो हो रहा है, in that show 50,000 people are there in a stadium. So that is a limit for the stadium कि आप पास 50,000 लोग ही आ सकते हैं. But if you do that show in the metaverse, then the limit expand like multiple times. Like एक famous YouTuber और singer ने किया था अभी शो, ट्रेविस स्कॉट. उनके उनके simultaneously 15 million लोग, like 1.5 CR लोग, करोड़ लोग आए थे उस शो में in the metaverse. So that's how like metaverse expands the possibilities of things. And not only this, remote working, if you want to collaborate with people who are living in other range, other states, other part of the world as well, at metaverse you can come along, you can hang out, and you can work with them. So the startup which I worked on, Meta Aero, was was building a startup around this, was building a project around this. Key creators can come, artists can come, and then they can sell their art in the metaverse. They can host shows as well in form of NFTs, in form of and tokenizing their content as well in form of NFTs. So this is a bit about what I did in metaverse. Yeah. So I think somebody has question. Shelly. Yes, a student has raised hand. Go ahead and ask your question. Shelly Thakur, you can unmute yourself and you can ask question. Rohit, you can also ask question after Shelly. You need to unmute. You are muted. Rohit, you can ask, beta. You can ask the question if you have any. Good evening, sir. I am very thankful. I am Rohit.
आई एम द स्टूडेंट ऑफ आईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, थर्ड ईयर, मैकेनिकल ब्रांच। सर, अगर हम स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें जैसे पता है मुझे जहाँ तक है कंसेप्ट, कैलकुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं किसी मतलब स्टार्टअप का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो अगर हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें कितना कैल मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे लगाएं हम, क्या अगर कोई हमें चीज़ बनानी है तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे किया जाए सर? गॉट इट। थैंक यू फॉर आस्किंग। तो सो जितना मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, आप ये पूछ रहे हो कि कोई भी स्टार्टअप करने के लिए कितना कॉस्ट लग सकता है, उसका एस्टिमेशन कैसे करें, राइट? ये पूछ रहे हो आप? यस सर, यस सर। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि या तो रोहित, तो आई जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग कि अगर आप कोई भी चीज़, अगर स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर इट आउट कि आप बनाना क्या चाह रहे हो, और इफ द मार्केट वांट्स इट और नॉट। सो जस्ट इन केस ऑफ लाइक ओयो, ओयो का मैं देता हूँ एग्जांपल। ओयो ने, आई थिंक यू वुड नो ओयो क्या करता है, दे प्रोवाइड होटल बुकिंग्स एंड यस सर, आई नो। तो ओयो का ये नहीं था कि वो एक साथ तुरंत ही अपना ऐप लॉन्च कर दिया या एक साथ तुरंत ही सब कुछ कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे उन्होंने एक होटल पकड़ा, वहाँ पे देखा कि लोग कैसे आ रहे हैं, उन्होंने एक रूम को सजाया, फिर उस बेसिस पे चलाया कि कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं। फिर इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने रेप्लिकेट किया। सो फर्स्ट यू हैव टू टेस्ट इन अ वेरी लिटिल सैम्पल स्पेस टू गेट अ वैलिडेशन फ्रॉम द मार्केट। तो एक बार जब वहाँ से वैलिडेशन आएगा, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अप ए प्रोडक्ट और समथिंग दैट कैन स्केल। उसके तो आई जस्ट सजेस्ट दैट कि अगर आपको कोई आइडिया आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क ऑन कि आप उसको बिना टेक के इन्वॉल्वमेंट के कैसे सॉल्व कर पाओ, बिना ऐप के, बिना कोई वेबसाइट के। आप देखो कि लोगों को चाहिए क्या, इफ मार्केट वांट्स इट और नॉट। उसके बाद फिर आओ कि कैसे चीज़ों को टेक से स्केल करा जाए। So in scale of tech, you will require different thing from server cost, from development cost, or anything else. और तो इस इन चीज़ों को फिर यू हैव टू लिस्ट इट आउट कि आपको फिर एक प्रोडक्ट की जर्नी बनानी पड़ेगी कि आपको इस मोमेंट पे क्या क्या की चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो कोई फूड डिलीवरी का ऐप बनाना है, तो आपको अगर लिमिट करना है कि यू वांट टू सर्व इन बैंगलोर ओनली, तो बैंगलोर में आपको कितने एरिया तक सर्व करना है, आप कितने डिलीवरी पार्टनर्स को मैनेज कर सकते हो, और आप कितने होटल्स को ले सकते हो, तो उस यूनिट इकोनॉमिक्स तक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू फिगर आउट कि अगर आप उसको स्केल करोगे तो वो कितना जाएगा। तो दैट्स द एस्टिमेशन पॉइंट। आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, आई अंडरस्टैंड सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।